Hello students and welcome to today's biology class. In the previous class we had discussed about two different phylums of animal kingdom, that was your Coelenterata and Ctenophora. तो हमने उनके properties देखे, generalized properties, reproduction mechanism, and we've also seen about some of the examples of those phylums. Today we'll move on to the next two phylums of animal kingdom, that is Platyhelminthes and Aschelminthes, or Nemathelminthes. It is also known as nematodes, commonly referred to as. So let us begin. Phylum Platyhelminthes. Now from the word itself you can suggest, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें दो वर्ड से बना हुआ है ये स्पेसिफिक नेम, जिसको हम लोग Platyhelminthes बोलते हैं. प्लाटी मतलब प्लेट लाइक और फ्लैट. Helminthus means worm. So we can call them as flatworms. Straight away सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इनका होता है, they possess dorso-ventrally flattened body and thus are called as flatworms. इनका बॉडी फ्लैट होता है फ्रॉम द डोर्सल साइड एज वेल एज द वेंट्रल साइड. तो दोनों तरफ से वो चपटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लैट वर्म्स बोलते हैं. दैट इज द रीजन इनका फाइलम का नाम जो है वो प्लाटीहेल्मिंथेस है. नाउ दिस इज हाउ देयर बॉडी विल लुक लाइक. एज यू कैन सी, this is an example of planaria, and here you will find ki the lower surface, which is the ventral side, and the upper surface, which is the dorsal side, both of them are flat. Okay, the body is completely flat. Now they exhibit bilaterally symmetry, मतलब उनका bilateral symmetry होता है. If you uh, divide this organism from the mid sagittal plane, both the sides will be equal. Diploblastic, bilaterally symmetrical, and then diploblastic means they are having only two germ layers. एंड दे आर एसिलोमेट. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि आप लोग देखो इसका बॉडी पूरा फ्लैट होता है, मतलब डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड से दोनों तरफ से वो चपटा होता है, फ्लैट होता है. तो उसके अंदर बॉडी कैविटी रहने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज देयर इज नो स्पेस फॉर ए बॉडी कैविटी, एंड दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज एसिलोमेट एनिमल्स. दे डू नॉट हैव ए बॉडी कैविटी एंड देयर बॉडी इज हैविंग ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये है कि इनके बॉडी में ऑर्गन्स हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है. लाइक यू कैन सी हियर, ganglia is there but nervous system is not there. Gastrovascular cavity is there but digestive system is not there. Pharynx is there but respiratory system is not there. तो मतलब इनका सिस्टम नहीं होता, सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं, और यही ऑर्गन्स उनका मेटाबॉलिक फंक्शंस कैरी आउट करते हैं. So that is the reason we call it as organ level organization. Now ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. दे आर जनरली एंडोपैरासाइट. अब एंडोपैरासाइट का मतलब ये होता है, एंडो मींस इनसाइड, parasite, as you know कि these are the organisms which live in the other organisms body which are called as host. तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. समटाइम्स दे माइट कॉज इन्फेक्शंस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस एज वेल. सो दिस पैरासाइट्स दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अगर वो होस्ट सेल के अंदर रहते हैं या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइट. लेकिन कुछ पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं. ओके, लाइक मॉस्किटो, लीच, इस टाइप का एग्जांपल, जो बॉडी के बाहर रहते हैं और वो न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम ए होस्ट ऑर्गेनिज्म, उनको बोला जाता है एक्टोपैरासाइट. So endoparasite are those parasites which live inside the body of the organism and take nutrition from it. Now, when they are present inside the body of the organism, they need certain structure to attach themselves to the host body. ठीक है, तो जो वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उनको अटैचमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए. अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू स्टे विद इन द बॉडी. दे विल बी एलिमिनेटेड आइदर through the digestive tract or sometimes through urine and all. उनको मतलब they need to stick to some place, and that is where these two structures come into uh, play. That is the hooks and the sucker. इनके पास दो चीजें होते हैं, एक होता है हुक और दूसरा होता है सकर, जो इनको अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं. और एक बार वो अटैच हो गए, they can directly absorb the nutrients from their body surface. They do have a mouth. Okay, उनका माउथ होता है, लेकिन वो लोग अपने बॉडी सरफेस से भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं. Osmoregulation and excretion is carried out by flame cells. Now ये इनका एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, फ्लेम सेल, which is responsible to carry out the mechanism of excretion. जो वेस्ट मटेरियल होता है, स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये लोग फ्लेम सेल्स का हेल्प लेते हैं. नाउ इट इज अ नेम इज गिवन फ्लेम सेल बिकॉज इट लुक लाइक फ्लेम. ठीक है, तो वो आग जैसे दिखता है, इसीलिए उसको फ्लेम सेल्स बोला गया. Besides that, it is also responsible to maintain the water balance within the body, which is called as osmoregulation. ठीक है,
तो बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस, आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी फ्लेम सेल्स ही यूज होते हैं ना. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ओस्मो रेगुलेशन. ठीक है. Now let us see how this structure looks like. This is how your flame cell will be. Now if you take a cross section of the body, ये उसका internal structure है. Now there you will find ऐसे कुछ छोटे छोटे projections होंगे which is shown here. अब उसको magnify कर दोगे तो आप ये कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है. So this is the flame cell. Okay. Is look like flame, जैसे आग निकल रहा है ऐसे दिख रहा है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया flame cell. So this is the excretory organ. Now इनमें देखो ये tubes हैं. Now they are having this tube like structures. Now these tubes will carry the waste material or you can say the nitrogenous waste to be more specific. It will be carried out and उनके body के surface में से छोटे छोटे छेद होते हैं. There are small holes here, right? So these holes are connected to these tubes. These are called as excretory pore. तो जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा इन ट्यूब्स के चलते वो लोग सीधे आ जाएंगे टुवर्ड्स द एक्सक्रीटोरी पोर एंड फ्रॉम हियर दे विल बी एलिमिनेटेड टू आउटसाइड. ठीक है. सो दिस इज हाउ देयर एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, their sexes are not separate, fertilization is internal and development is indirect with a larval stage. ठीक है. तो हम जानते हैं कि इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स उनका सेक्स से सेपरेट नहीं होता, मतलब मेल एंड फीमेल विल नॉट बी डिफरेंट इंडिविजुअल्स. दे कैन हैव बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो हम लोग एक तरह से उन्हें बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं. और फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, मतलब मेल फीमेल गैमेट विल बी फॉर्म्ड बट दीज टू गैमेट्स विल फ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल. एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मींस देयर विल बी अ लार्वा स्टेज. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि from the birth till the adulthood, if there is no morphological change, that is called as direct development. लेकिन कभी कभी ये होता है कि from the birth till adulthood बहुत सारे different morphological anatomical changes body में आते रहते हैं, और अगर वैसा कोई स्टेज रहता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे लार्वल स्टेज आ जाता है, एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेज लार्वल स्टेज आ जाता है, जिसके चलते इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला गया है. Now, some of them like planaria have the property of regeneration. That means कि अगर इनको छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाए तो हर एक फ्रेगमेंट रीजेनरेट कर सकता है एक नए इंडिविजुअल में. Now, let me tell you, students, we have already said कि regeneration is not a complete asexual mode of reproduction, but this is a unique case. यहाँ पे प्लानेरिया में रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन की तरह ही काम करता है. So that is very unique about this group of organisms. Now remember, all the organisms of this group will not carry out regeneration. It is only specific to certain organisms like planaria, as it is given here. Now examples: planaria, Taenia solium to be the complete name of this organism, जिसको हम लोग टेप worm भी बोलते हैं. Fasciola hepatica, simply known as Fasciola, the genus name, which is called as the liver fluke. So these are very common examples of this group. Now let us see one by one. This is planaria. This is very flat, तो इसको तो हमने previous slide में भी देखा हुआ है. Now this is tapeworm. ठीक है. Tapeworm because it looks like a tape, like a ribbon. And this is Fasciola hepatica. Fasciola hepatica, also known as liver fluke, because it lives in the liver of mammals. तो ये एक parasite है, liver of mammals में मिलता है. Tapeworm जो होता है आपके intestine में मिलेगा. Planaria is free living, it is not parasitic in nature. So these are the examples of this group called as Platyhelminthes. Let's move on to the next group, that is Aschelminthes. Aschelminthes is generally called as roundworms. ये वही पे फिर दो वर्ड से बना है, एस्क एंड हेलमिंथिस, दोनों कंबाइन होके बनता है. तो इससे पहले वाला जो ग्रुप हमने देखा है, बहुत हद तक ये दोनों ग्रुप सिमिलर होते हैं टू मोस्ट एक्सटेंट, बट देयर आर सर्टेन बेसिक डिफरेंसेस एंड दैट इज द रीजन कि इनको दो अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड कर दिया गया. सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है द बॉडी इज क्रॉस सेक्शन वाइज सर्कुलर एंड दस कॉल्ड एज राउंडवर्म. ये लोग फ्लैट नहीं होते हैं, दे आर नॉट फ्लैट लाइक द प्रीवियस ग्रुप दैट वी हैव सीन. इनका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है टू बी मोर प्रिसाइज, और यू कैन से उनका क्रॉस सेक्शन वाइज अगर देखोगे आप लोग तो वो सर्कुलर होगा. सो दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज द राउंडवर्म्स. दे कैन बी फ्री लिविंग, ओके, दे विल फाइंड इन द एटमॉस्फेयर, स्पेसिफिकली एक्वेटिक भी हो सकते हैं. दे कैन आल्सो बी टेरेस्ट्रियल और समटाइम्स दे कैन आल्सो एक्ट एज पैरासाइट. नाउ ये जो प्रॉपर्टी है देखो, ये प्रीवियस ग्रुप के साथ सिमिलर है. और ये जो पैरासाइट भी होते हैं एस्केलमेंथिस, मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट्स, मतलब वो लोग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, होस्ट के बॉडी के अंदर रहेंगे. ठीक है. The same property again, bilaterally symmetrical है, but here there is a major difference between the two groups.
एस्कहेलमिंथिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स इनके 3 जर्म लेयर्स होते हैं. द आउटर लेयर कॉल्ड एज एक्टोडर्म, द मिडिल लेयर कॉल्ड एज मेसोडर्म एंड द इनर लेयर कॉल्ड एज एंडोडर्म. So this we have already discussed, students. Diploblastic क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, at the beginning of this chapter. Please refer to those videos if you are still having any doubts. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज सूडोसिलोमेट. ये भी डिफरेंट हो जाता है. ये आपका प्लेटीहेलमिंथस जो था हम उसको बोले थे एसिलोमेट, बिकॉज फ्लैट बॉडी है तो कोई सिलोम नहीं होगा, देयर विल बी नो बॉडी कैविटी. बट ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका बॉडी कैविटी होता है, बट इट इज नॉट ए ट्रू कैविटी. ठीक है, दे डू पोजेस ए बॉडी कैविटी बट इट इज फिल्ड विथ टिश्यूज एंड इज नॉट सराउंडेड बाय मेसोडर्म. उसके चारों तरफ मेसोडर्म का सराउंडिंग होता नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूडोसिलोमेट. एंड दिस ऑर्गेनिजम्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये देखो प्लाटीहेलमिंथिस से ये भी एक डिफरेंट पॉइंट हो गया. प्लाटीहेलमिंथिस में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था और इनका होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. दैट मींस दे विल हैव ए डाइजेस्टिव सिस्टम, दे विल हैव ए नर्वस सिस्टम, दे विल हैव एन एक्सक्रीटोरी सिस्टम. तो इनके बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, एक या दो इंडिविजुअल ऑर्गन्स नहीं होते. ओके. They have a complete alimentary canal. Now alimentary canal is your digestive tract. इसको gastrointestinal tract भी बोलते हैं. हमारा digestive system जो होता है उसको alimentary canal बोला जाता है. It starts from the mouth and it ends at the anus. वो एक single tube होता है from the mouth till the anus. उसको alimentary canal बोलते हैं. Along with a muscular pharynx. Now pharynx is generally a common pathway for both food and air. ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है फेरिंग्स, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. बट फॉर द टाइम बिंग रिमेंबर फेरिंग्स इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फूड एंड एयर. तो आप नाक से जो हवा लेते हो वो भी फेरिंग्स देके जाता है, आप मुंह से जो खाना खाते हो वो भी फेरिंग्स देके जाता है. सो दैट इज अ कॉमन ट्यूब थ्रू व्हिच बोथ एयर एंड फूड कैन पास. Excretory products are excreted through excretory pore. This is quite similar to the previous one. तो excretory pores होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो लोग अपना वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज करते हैं. Now this is how their body looks like. उनका anatomical structure है. You can see they're cylindrical, worm-like. Now they have a mouth. They have this complete digestive system. ये जो बीच का आप लोग पिंक कलर का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द एलिमेंट्री कैनल और द डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो सीधा जाके एंड होता है इन द एनस. ठीक है, so it starts with the mouth and it ends at the anus, so that means they have a complete alimentary canal. ठीक है. Besides that, they do have reproductive systems, like ovary is given here, so that is a female reproductive organ. They do have excretory pore, which is the excretory part from which they release their waste material. At the same time, they have a nerve ring, which will act as the nervous system. Along with it, these nerve fibers are there, which is not shown in this diagram. So you will find that this organism is having an organ system level of organization. The sexes are separate. Now this is also a different property. That means they are dioecious. Male individual alag hoga, female individual alag hoga. So male reproductive organ will be only present in the male individual, female reproductive organ will only be present in the female individual. That is called as dioecious. ठीक है. They also exhibit sexual dimorphism. अब ये sexual dimorphism क्या होता है? अब इसको डिवाइड कर दो, वर्ड का मीनिंग निकल जाता है. सेक्सुअल मींस इट इज रेफरिंग टू बोथ द सेक्स, मेल एंड फीमेल. डाई मींस टू, मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फीचर्स. तो यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स विल बी हैविंग डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. मतलब मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड मॉर्फोलॉजिकली फीमेल अलग अलग दिखेंगे, दे विल नॉट बी द सेम. देखो इससे पहले वाले जो ग्रुप हैं जो फाइलम्स हमने उनमें देखा है, लाइक टेक द एग्जांपल, अगर आप लोग एक हाइड्रा देखते हो तो मेल हाइड्रा फीमेल हाइड्रा में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे वो लोग. बट यहाँ पे जब आप लोग एस्कहेलमिंथिस तक आ जाते हैं, नेमाटहेलमिंथिस तक आ जाते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नेमाटोडा, दिस फाइलम इज कॉल्ड एज नेमाटोडा. तो ये नेमाटोड्स जो होते हैं इनमें मेल और फीमेल पूरा डिफरेंट लगेंगे, दे विल बी मॉर्फोलॉजिकली कंप्लीटली डिफरेंट. दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. इनका भी मेल और फीमेल गैमेट प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब उसका कोई इंटरमीडिएट लार्वा स्टेज होगा, और डायरेक्ट डेवलपमेंट मींस देयर विल बी नो सच स्टेजेस. ठीक है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट. एग्जांपल Ascaris, commonly known as roundworm, Euchereria bancrofti, to be the most specific genus and species name, that is Filaria worm, and Ankylostoma, which is also known as the hookworm. तो ये तीन कॉमन एग्जांपल्स होते हैं.
of this group. Now this is how your Ascaris looks like. Ascaris is actually an endoparasite which lives in our intestine, and it can cause a very severe you can say infection which is called as ascariasis. ठीक है, तो वो एक disease cause करता है. Now here you can see male or female different है. Male it is smaller and having a curled tail, whereas female is larger with a pointed tail. तो इनका देखो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जो हमने यहाँ पे पॉइंट में मेंशन किया है कि मॉर्फोलॉजिकली दे विल बी डिफरेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड. Now this is Euchereria bancrofti, which is generally found in the body. It gets into your bloodstream, then moves into your lymphatic system and causes the disease filaria. ठीक है. Now the next one, this is your Encyclostoma, commonly known as hookworm. Even this is a parasitic organism. ये भी एक parasitic organism होता है. So these are the different examples of Aschelminthes. Also, you can call it as Nemathelminthes. Also, it is also known as Nematoda. So these are the two different phylums, Platyhelminthes, Aschelminthes, which are worm varieties. One is flatworm, the other one is roundworm. In the next class, we'll move on to the next phylums, that is Annelida and Arthropoda. Thank you. Thank you, everyone.